ऑलराइट, सो प्रीवियस स्टेज में हम लोगों ने क्या किया हुआ था, हमने ब्लॉक्स कैरेक्टर क्रिएट किए थे एंड वी हैव क्रिएटेड दी हायरार्की। हमने बोन हायरार्की इस्टेब्लिश की, हमें स्केलेटन वगैरह समझ आ रहा था। नाउ अब हम लोगों को, आई जस्ट प्रेस अ जी जस्ट बिकॉज आई डू नॉट वांट टू सी माय ग्रिड। नाउ अब इस स्टेज के बाद क्या, क्योंकि हमने कैरेक्टर को ज़रूर रिग एक स्केलेटन प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन कैरेक्टर को अभी हमने रिग नहीं किया है। अब इसके लिए जनरली क्या होता है, पपेटिंग सिस्टम होता है। पपेटिंग सिस्टम में हमको क्या करना होता है, कंट्रोलर्स प्रोवाइड करने होते हैं। स्केलेटन बनता है एनाटॉमी के आधार पे कि जो ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, वी डोंट हैव मैश राइट नाउ, क्योंकि इसके मैश जो हम लोगों ने बनाए थे वो हार्ड डिस्क में चला गया। सो नाउ अब हमारे पास वी विल ब्रिंग दैट बैक और फिर उसमें बनाएंगे। सो फॉर नाउ हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को हम इसमें कंट्रोलर्स प्रोवाइड करेंगे। सो हाउ टू प्रोवाइड द कंट्रोलर, कुछ बेसिक कंट्रोलर्स हैं जो हर जगह होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके लिए कंट्रोलर्स के लिए मैक्स में काफ़ी क्रिएटिव ऑप्शंस हैं। वाई फ्रेम ऑफ कर दें, हाँ, तो वाई फ्रेम ऑफ करेंगे तो हमें वो नहीं नज़र आएगा। तो हमें क्या करना होगा, सबको सेलेक्ट करके ऑल टेक्स्ट करना होगा इन ऑर्डर टू सी दैट। आई थिंक ऐसी सिचुएशन में वायर फ्रेम वाज मच बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें लाइंस में जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोलर्स बनाएंगे। मैक्स में एक खास चीज़ है कि लाइन सिस्टम काफ़ी अच्छा काम करता है, जो कि माया के कंपैरेटिवली बेटर है। इसमें आप अपनी मर्जी से क्रिएटिव होकर किसी भी तरीके का कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम, नो इट्स नॉट, लेट्स गो फॉर अ सर्कल। ठीक है, एक बेसिक स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर हम लोग जब मॉडल्स में जाएंगे तो थोड़े से और क्रिएटिव कंट्रोलर्स ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो कंट्रोलर आएगा वो रहेगा हमारा मास्टर कंट्रोलर। ठीक है, ये वो कंट्रोलर होता है जो जनरली पूरे ओवरऑल कैरेक्टर को मूव कराने या उसको स्केल कराने, रोटेशन कराने, उसका पूरा ओरिएंटेशन एक बार में चेंज करने के लिए होता है। सो दिस विल बी अवर मास्टर कंट्रोलर। नाउ राइट, फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर देंगे। आइदर वी कैन टेक अ कॉपी ऑफ इट और इसको हम पिविट के पास रख देंगे। ऑल राइट, सो दिस विल बी अवर पिविट। ये हमारा पिविट रहेगा। अब इसके बाद जॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं, तो मैं इसी के रिस्पेक्ट पे एक कंट्रोलर हर एक जॉइंट्स के लिए, डिपेंड करता है, आपको अगर नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन जितना ज़्यादा कंट्रोलर्स देंगे उतना ज़्यादा मॉड्यूलेशन होगा। और इसमें भी कंट्रोलर्स को भी रिग किया जा सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंट्रोलर को मूव ही कराना हो सकता है कंट्रोलर केवल मैं इसलिए ले रहा हूँ जो बाद में मैं मूव कराने के लिए यूज़ करूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्पाइन 01 कर दूंगा। ठीक है, इसको भी हम फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। एक ये, इट वाज 01 था ना, तो दिस विल बी 02। दैट्स गुड, फ्रीज ट्रांसफॉर्म। सो नाउ वी हैव अ स्पाइन 03, बट इसका नाम हम देंगे क्लैविकल, क्योंकि वो ये वाला हिस्से को कंट्रोल करने के लिए रहेगा, अबाउट द चेस्ट एरिया एंड एवरीथिंग। अब इनको थोड़ा सा इनोवेटिव इसलिए रखते हैं ताकि इससे क्या इनका मोशन समझ में आने लगे। ठीक है, तो इसको ऐसा रखेंगे और ये जो तीन है, हम्म,
जब आप फ्रीज ट्रांसफॉर्म करते हो और जब आप कोई ऑब्जेक्ट को चेंज करते हो, मान लो फ्रीज ट्रांसफॉर्म के बाद आपने उसकी रोटेशन वैल्यू या स्केल वैल्यू चेंज की, तो उसको वापस उसकी जगह पे पहुंचाने के लिए आप ट्रांसफॉर्म रोटेशन टू ज़ीरो करेंगे। ट्रांसफॉर्म टू ज़ीरो करेंगे तो जो आपने फ्रीज ट्रांसफॉर्म मारा है वहीं पे आके वापस से लग जाएगा। लेट्स गो ओवर हियर। क्लास एडमिट कार्ड नहीं समझ में आ रहा है। ओके। इसका ओके, आपका ऑर्डर नंबर दीजिए। हाँ नहीं, बाहर निकालिए। आपका एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया आपके पास में? मेरे नहीं आया शायद, आपके पास में नहीं आया। मुझे यू शूड, आपका एग्ज़ाम हो गया? हाँ। बाकी सारा डिटेल्स था ना उसमें? नहीं, एग्ज़ाम के जो उसमें था इनका अपलोड हुआ? ठीक है, इसको विल नोट दैट डाउन। राइट, आप अपना ऑर्डर नंबर आपने लिखा दिया है। सर को रिजल्ट के बारे में कैसे पता चलेगा? आपके एडमिट उसकी में, तो जो आपने वहाँ पे उनकी साइट्स में जो कस्टमर केयर नंबर होता है ना, वहाँ कॉल करना। उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाते। दे माइट हैव टू, बिकॉज करेंटली हम लोग को उनकी तरफ से इस चीज़ के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। अच्छा। तो हम लोगों को केवल यहाँ के कंटेंट का होना था। राइट, सो अभी आपका एग्ज़ाम हो गया है। नेक्स्ट टाइम अगर आप आते हैं, है ना, अभी नेक्स्ट में भी लगा है क्या आपका? नहीं सर, अभी तो ये था ना, तो लेट्स भी कोई इशू नहीं, वो दे विल कांटेक्ट यू, है ना। अगर नहीं होता है तो देन यू कैन एक्चुअली कांटेक्ट देयर यहाँ का ब्रांच है, ओके, तो वो मिल जाएगा। थैंक यू, वेलकम। नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा कैंडिडेट रहेगा ना जो जिसके पास नहीं है, अगर फ्रेंड ला के दे रहा है तो ठीक है, उनको 10 मिनट्स 15 मिनट्स दे दीजिए, लेकिन एंट्री नहीं देना है, क्योंकि हम पियर्सन को नहीं बताया इस चीज़ के बारे में, और हमें उसी समय पियर्सन को कॉल करना है। तो अभी अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो फिर तुरंत मना करिए, उनको बोलिएगा अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है तो देन मेरे को बताना, हम लोग पियर्सन को कॉल करके वहाँ से बात कर लेंगे, उनको फिर एग्ज़ाम दे देंगे कोई, है ना। अभी फ़िलहाल हो गया तो लेट्स नेक्स्ट उसमें, क्योंकि अब इन्होंने बोला था कि मिल जाएगा, अब ये बोल रहे हैं कि मेरे पास एडमिट कार्ड ही नहीं है ना, मेरे को तो आया ही नहीं। तो दैट मीन्स कि या नेक्स्ट टाइम अगर वो ला रहे हैं तो वहाँ से वही फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, तो एग्ज़ाम में अब हम लोग नहीं देंगे। हाँ, तो हंस क्यों रहे थे तुम लोग? देखो वहीं से कॉल आ गया। हेलो, यदि, हाय, गुड आफ्टरनून, आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू? अबाउट regarding which matter? No, I'm not aware of that my management has received that. Let me just check that.
sure. Yeah, sure, sure. Definitely. I'll just revert back in few minutes. Okay, thank you. रोशन, नीचे जाना अपने क्या बोलते हैं ट्विंकल मैम के पास और बोलना वो लॉग शीट और बाकी जो लॉग शीट बोलना पियर्सन की लॉग शीट। हाँ, लॉग शीट और मार्कर वगैरह ये सारा चीज़ का जो डेटा था वो आया क्या आपके पास, प्रिंट आया क्या, पार्सल आया क्या वहाँ से पियर्सन वालों के यहाँ से कोई पार्सल आया पियर्सन। हाँ हाँ हाँ, अंकित सर पूछ रहे हैं पियर्सन का पार्सल आया क्या। ऑलराइट, सो चलिए हम लोग अब नेक पे आ गए थे तो इसका नेक नाम रख देते हैं NEC के नेक, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स गिव इट अ फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। ये हो गया और इसकी ज़रूरत नहीं बिकॉज इट डजेंट मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हैंड है और हैंड में और लेग्स में हम लोग डेफिनेटली दो दो चीज़ें अलग से लगाएंगे। सो आई जस्ट टेक या एक कॉपी ले लेते हैं और इसको एक लेग का पेडल सिस्टम बना देते हैं, यानी कि एक पेडल जैसा इसका शेप बना देते हैं सो दैट हमारे पास यू विल गेट द आइडिया कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा। समटाइम्स यू हैव टू बी क्रिएटिव विथ योर rigs so that they could translate that whatever the function that could happen through that। अभी मैं 2D पेडल जैसा बना रहा हूँ तो दैट मीन्स इट कुड बी ओनली बी डूइंग दिस, राइट, या रोटेशन कर सकता हूँ। बट अगर ये 3 डायमेंशनल होता ना ऑब्जेक्ट, लेट्स जस्ट से इफ इट इज़ काइंड ऑफ लाइक दिस ऑब्जेक्ट, अगर ये ऐसा होता तो आप इसका ऐसा रोटेशन भी सोचने लगते, राइट, ऐसा सोचने लगते कि ये एक्चुअल में ऐसा भी रोटेट हो सकता है। दिस इज़ द कॉमन साइकोलॉजी। तो उस चीज़ से हम बचने के लिए वी एक्चुअली डू some creative shapes। So यहाँ पे let's freeze transform that one, right, आ गया। what कितना क्वांटिटी आया वो कुछ नहीं, it's that's why I'm, तो इन दोनों को हमने फ्रीज कर दिया। ठीक, हाँ हमने खोला ओपन किया था उसको। शक्कर इज लाइक नॉट, अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये पेडल्स हैं। अब इसमें ये राइट लेग हो गया आपका, तो आप इसको राइट फीट करो या राइट अंडरस्कोप एल, जो भी आपको नाम दिखना है। दिस कुड बी आर होगा, ओके, सो एंड दिस विल बी लेफ्ट एल। ओ, नेमिंग जो भी हो यू कैन। ऑल राइट, सो अब हमने क्या किया है, एक फेस सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे भी हम लोगों को सेपरेट, नीज में भी लगेगा, इधर पे भी लगेगा, पीछे पे भी लगेगा, हर ह्यूमन के लिए ये चीज़ और लगती है। तो जस्ट गिव इट समथिंग लाइक दैट। ये बेसिक रिग है, फिर इसके बाद एडवांस रिग में जाएंगे जो ज़्यादा क्रिएटिव और वो होगा। फॉर दैट आई थिंक विल बी गोइंग फॉर द कैरेक्टर्स जो हमने बनाए थे। सो इस, हाँ ये एक्चुअल में ऐसा मोमेंट होगा इसका तीनों एक्सेस में। इट्स नॉट फॉर द रेस्ट, इट्स बेसिकली फॉर ओवरऑल मोमेंट। तो इसके लिए इसको हमने ऐसा बनाया। इसका एक और तरीका है बनाने का, बट जब हमारे पास अच्छा कैरेक्टर हम लोग अभी यूज़ करेंगे तब उसको बनाएंगे। सो फॉर दिस वन हम लोग इसको लेफ्ट हैंड, पूरा ओवरऑल हैंड्स, पूरा मोमेंट के लिए एक सिंगल कंट्रोल एंड राइट हैंड।
now what we have all of the controllers ready, and now let's start working with the rig, that how do you use controllers over it, है ना. अभी तो कंट्रोलर बन गए, अब इन दोनों को कनेक्ट करना है. हाउ टू कनेक्ट योर skeleton with the controllers. सामने ही बैठे होते. हेलो. Yeah, Deep, we had received your package. Right. Yeah, I have actually confirmed that. So I'll reconfirm about the quantity, but they got the package from you. Yeah. Right, we have received that. Absolutely. Sure. Okay. 100 log sheet and 250. Good. All right. Can. All right. Sure. 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 All right. Okay. Thank you. क्वांटिटी अलग से बताइए ना, बताइए कब कम आ गए तो. ओके, सो अब क्या है, इनके बीच में रिलेशनशिप्स लगाने पड़ेंगे, और हमारे पास कंस्ट्रेंट के सारे रिलेशनशिप हमको समझ में आ गए, वायर पैरामीटर समझ में आ गए, और रिएक्शन मैनेजर समझ में आ गया. तो हमें इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके इनके बीच में वाइस वर्सा रिलेशनशिप बनाने होंगे. ठीक है, रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप्स. नाउ अब क्या होगा, जैसे पिवट है, नाउ दिस इज़ माय पिवट बोन, जो कि ओवरऑल पूरी ज्योमेट्री को कंट्रोल कर रहा है. तो इस पिवट को मुझे इसके साथ जो ज्वाइन करना होगा. अब ये पिवट जो है, ये इसके साथ कौन सी वैल्यूज़ को वो कंट्रोल करेगा. सो इट्स ऑल वैल्यूज़, क्योंकि वो उसका स्केल, उसका रोटेशन, सारा चीज़ करेगा. तो वो लिंक यहाँ से दिया जा सकता है, राइट. सो वी विल बी यूजिंग दिस शॉर्टकट, और अदर देन दैट, फ्रॉम वेयर यू कैन यूज़ दैट, सो यू कैन यूज़ दैट थ्रू animation constraints and link constraint. So we'll be selecting this, click and drag and put it right over here. Now we have got the control over our pivot. Now for this, which type of constraint we should use? Why? All right. Why? There's a the query you have. Yeah, the query you have was that why we should use a position constraint for that. If you say it's a position constraint, so definitely it is not a correct thought, because you won't be needing position shift for your spinal cord, right? For the spine, you will be needing an orientation, right? So that is what you need to use. Select your bone and then go to animation constraints and orientation constraints. Go for that, select it, and it will actually show you. Right, so we have to select this, and then we'll have to see. So now it's moving that. So oops, we had used the wrong one actually. Right, so we have not to use that, we just have to use the right. And okay, all right, let's delete the orientation target, or probably we could have add the orientation target for this one, right? So now this is the orientation target, correct? Then let's select this bone as well, and this provide this one the orientation target. So you just have to select that, go to animation constraint, and provide an orientation constraint for this. Again, keep initial offset, right? And for this one, for the clavicle, you have to select this bone and then give it an orientation constraint to this.
keep initial offset on, so that now you can use the clavicles. For the neck, you just have to orientation, just go for that. So now what we had done, we had actually created a hierarchy of controllers, right? So this one is the master one, which is controlling this one, and this one is controlling this one, this one is controlling this one, this one to this, right? It has to be like that, right? So now currently if I am going to use this one, the others are not gonna orient accordingly. Why? Because we only gave the authority of the controller over the bone and not on the other controllers. So we had to link these other controllers, and the process is that we have gone through from bottom to top. Now we can go from top to bottom itself. We just have to provide a link constraint to the respective descending controller. I can't speak that much of English. So we have selected that. Now with the clavicle, go for this one. Now with this, go for this, and with this, go for this. So now what we had done, we had actually adjusted all the controllers, and these controls are individually could able to give me proper orientation control over it. Now this hierarchy and the format of this rigging setup is actually called FK rig. It's an FK rig. It's a complete FK rig. Now what is FK rig? Right. It's a forward kinematics type of system, right? So this is the way you can use the similar way you can use this for a hand, and also you can use this for a leg, right? But every time you need to animate all of the controllers has to be animated if you are going for FK rig. So at that time you will be the animator will actually feel a lot of problems where while they were animating the simple walk cycle. Right. So at that point, what they will do? So the software developers or the 3D software actually guys, they had provided us another format of a hierarchy, and that is called IK, which is inverse kinematics, that is independent. FK is independent hierarchy format, because even though in FK we have the right over the master controllers, but others also have the control over the bones itself, right? So that is your independent sort of format. But in IK you will not get the individual control over all of the bones. It's a chain setup, so that you can directly provide link. So what I'll be doing, I'll just select the bone, right, and I'll go for animation, IK solvers, IK limb solver. I'll just select this one and go to the last bone which I could go through, and then what I will get a IK. Correct, that this is the locator of the IK. So it's a IK chain. I will give it a name IK underscore L. It's a left hand, so I'll give it an IKL. Now over here as well, let's apply. Now what will be the shoulder bone? Will it be for this thing? Alright, so this will be the shoulder bone, right? Let's select this one till here. So you just have to go to animation, IK limb solver, and we had just applied that limb solver over here. So now over here, as you can see, the elbow is over here, and you could not able to see any pole vectors.
Because earlier in the other classes we have been introduced with the pole vector. What is a pole vector? What क्या प्रोवाइड करता है? किस चीज़ को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है? तो फंक्शन क्या होता है उसका? आपने करेक्ट बताया उसका, फंक्शन आपने बताया करेक्ट, लेकिन चेन पे क्या असर पड़ता है, आई के बोन पे क्या असर रहता है, बोन सेटअप पे क्या फ़ायदा होता है उससे? यहाँ आप थोड़ा सा गलत बोल गए। लिमिटेशन का लेना देना नहीं होता है पोल वेक्टर का। पोल वेक्टर का लेना देना होता है रोटेशन के साथ। एल्बोज का रोटेशन कंट्रोल करने के लिए अगर आप हाथ, करेक्ट, वो एल्बो के रोटेशन को, जो बीच का क्या है, आपका चेन लग गया है, एज यू कैन सी देयर इज अ चेन ओवर हियर. So every time whenever you are squeezing on the near your shoulder, you can see that elbow is always going downwards in the direction right. So if you wanted to lift that over on the proper direction, you need to control this portion. And how do you control that portion? Through a pole vector. A pole vector is also a property which also to be automatically held in a IK chain. So that option is there, but that pole vector is actually a technical term for Maya. It is not the technical term for 3ds Max. The 3ds Max technical term for that one is swivel angle. Right. So you will call it as swivel angle. Okay. Angle. It's not an ankle. It's an angle. It's a swivel angle is actually pole vector of Maya. It actually gives you the control over the rotation of your elbow, right? Okay, so now you can see that I have all the control over the hands with bones and everything, and I can see that my controller is also over here. So I'll just attach that controller through this one. I'll just have to select it, give it a link constraint over here, right? So that I will get all the controller over my hands, right? So I could or I could not, because uh, if you are saying that I should give a pole vector controller, definitely I could give that one, and it is good to give that controller a direction. So it's a good thing, but you can also control that through parameter editor. So you can create your own set driven key kind of setup where you can actually control the rotation through. There are multiple ways to do that. Through a slider, you can mere slider, you can actually control the rotation as well. So that is to be seen later on. We could actually see that, but I should go for legs now, and then we're gonna discuss is where do you find the swivel angle and how do you control that. That is also a portion of discussion. So I'll just go on. I'll provide a limb solver right over here, and as you can see now, I did not get the value. Reason is that I have to select the third chain. So I'll just have to go on IK limb. The setup could only be used over in 3 of the chains. Other than that, it will always leave the last one and be connected to the latter one. Okay, so I'll just go IK, and oops, that was a wrong IK, so I'll just have to select that IK. And as I do not need to tell everybody about the bend is the key which actually gives you the value. So let's just say which actually
is the key which actually tells the IK on which direction the chain has to be bent. Okay, so now as you can see, this bend is there and I will get the angle. So how do you control that angle? To control that angle, you need to be on your IK handle and then go to motions. In the command panel, go to motions and then you will find a IK solver properties. There you will find the swivel angle. This will actually helps you rotate the this thing. So you've already got that controller over here, but it's logic that you have the IK and this will be actually connected to your controller. So why don't it would be best thing to do would be to connect your controller with the IK and take all of the parameters of the IK inside of these tools, right? Or I should say in these controllers we could give those parameters, special parameters, where you can actually adjust the swivel angle right through a slider over in the parameter of this controller. That would be much better. So now we had actually connected that, so we have got the leg connected, and now every controller has to be connected with your master one. So you just have to select that, select, right? So you just have to click and drag. Skinning, or probably we can do few things as well. Yeah, ask. Great. Huh? Right. Everything is connected over there. Yeah. So I think we should stop over here so that in the later on classes we will discuss about the skinning portion, and we can also do what we can give constraint to the body itself to your skeleton. I mean, just like you can try this one out. If you are gonna practice, you can just for the practice you can see this. Let's just say if this is the bone, I'll select and link, right? So I'll just do what? We'll just select this one and I'll give it over my bone. So whenever I lift the leg, it will actually follow the flow. That is one thing when you are working with a skeleton type of characters, the characters of in the horror movies, the skeletons, and if you are going for a blocky type of characters which does not have any modulation over their body, at that time you can use these portions. So you can actually connect these. It's a joint area, so either you can joint it with this one, either it doesn't matter. So you can just select that one and give it that, select that, give it this, and select that and give it to this. So now as you can see, the whole leg is actually connected. Do that along with everything. So let's just this is one form of, yeah, one form of skinning, which is, I should not, this is just kind of a practice you can do, but I would not say that this is your actual thing which you normally do in the production house. Generally when you have the objects, if they ask you for the objects, if they ask you exactly for the objects that you can use for which the objects which are actually kind of blocking, their shape is blocking shape, or either it's kind of a skeleton object which doesn't acquire any skins and only the blocks to be used. At that point
What happened? So at that point, and there are a lot of mechanical ways to use this one as well. If you are working on pistons or something, so you can use these ones as well. So we'll just um, connect to the bones just to get the idea of where is that bone. Right, so let's select, and yeah, so I'm just connecting that, and you can see right over here, you can now, your character can now sit and everything. No? But now there is a situation, we are actually, we could, their link has broken, so you just have to select that and give that link right over here. Why it is broken, can you tell? Yes, exactly, to the master controller, right. We have connected that to the master controller, and that is why the reason, that was the mere reason. All right, so let's select and give it to the pivot, so that okay, oh, that's a wrong one. Yeah, body to bone, right? Select to bone, select that to the bone. Just end हुई है whatever. क्या चाहिए? हम्म हम्म तो हम्म ओके ओके हम्म ओके ठीक है ना कोई या वो बची हुई है अभी भी किसी yeah because maintain offset was not on so that's why have you sent that reference huh. This one left, right, so we just have to give this one connection, right, so now you can actually use that one also. So now we have the character which yeah sure let me see है क्या then फिर मैं commit कर पाऊंगा ना भेज दियो हम्म हम्म ये उसकी इमेजेस हैं है ना और ये क्या है ये क्या गलती से भेज दिया क्या ये वाला ये क्या है ये कंटेंट जैसा चाहिए रेफरेंस हम्म हम्म ऊपर लगाना है ना ये चलो ठीक है इसी का बना के भेजना है ना और नीचे आपने रेफरेंसेस भेजे हो ओके सजल का क्या हुआ इसी चीज़ को बना रहा है ओके ओके चलो कितने साइज में चाहिए A4 कोई भी एक साइज में बना दें कौन से साइज में बनाना है इनको
स्क्वायर शेप में चाहिए ना। हाँ सोशल मीडिया 1024 का बना देते हैं, छोटा करना होगा बड़ा करना होगा अपने आप हो जाएगा। चलो मैं भेजता हूँ आपको। That's it for today.